Hello everyone, very good evening and welcome to BYJU'S Exam Prep. First of all, inform me that sound quality, picture quality, everything is fine. Yes, please. First of all, inform me that sound quality, picture quality, everything is fine. Now, this is important session. Here I will discuss. Give me 1 minute. Okay. Now, yes, everything is fine. Dhruva, how are you? A very good evening, Divyam. Now, this is very important topic. If you will get, that is what mainly what get 2022. Then what will you get? Right? And that is, okay, please tolerate with this Divyam. If some echo, now with some time it will clear. Okay, give me 1 minute. 1 minute. Now it is fine. Okay, then. So this is very important topic. We all prepare forward GATE 2022. If results will not in our favor, then what will happen? It may possible because of some unforeseen conditions, under COVID situation, under stress of these exams, it may possible we can't perform according to our expectation. Then what next? What about the B plan? If the A plan is what simply we want the single digit rank in what GATE 2022. Definitely, we all are preparing for all these exams. So 2018, Dhruv and other students. First of all, I will give you the idea about each and everything. Then simply you can ask questions. Just after 15 minutes, you will be able to ask your own questions. Aditya, your voice is not clear. Now, please tell me, everyone, please give me the answer. That voice is clear to yes or no, please. Give me 1 minute. Give me 1 minute. Hello. Now it is audible? Yes, please. Is it audible? Okay, otherwise, okay. Please cooperate with me. Okay then. So much echo. There is enough. Now, that is my introduction. Myself, Sanjay Rathi. I am having 20 plus years of teaching experience in the field of competitive exams like ESE, GATE and PSU. And I have qualified and selected for engineering services exam that is conducted by UPSC. These are my ranks: AIR 16 in ESE 2005 and AIR 21 in ESE 2008. And I have mentored more than 1 lakh students for these exams. So this is simple qualification. And according to my experience, if we are preparing for some exams, it may be a GATE exam, it may be what UPSC Civil Services, UPSC Engineering Services, or what in 12th, after 12th class IIT entrance and so on, right? Now my dear friends, simply we have if A plan, then we have to make what B plan also, because in 3 hours, sometimes what about the duration of the GATE 2022? 3 hours, right? 1 day, and in 1 day we have to perform according to our expectation. Sometimes it may happen that we are not getting the good marks, we are not getting the good rank, we are not getting the good scorecard. Then what? What next? Yes or no? That is a valid question. Yes or no? Please tell me. Then simply, now my dear friend, that is a part of life. Simply, if I want to switch from one peak to what another peak, then this will be my journey. Always remember, that will be what our journey. Sinusoidal curve. In life, we are having what? Sinusoidal curve. Yes, definitely. Always remember this thing. So after GATE exam or any national level exams, suppose we are preparing for our GATE 2022, it is national level exams, then definitely we have to follow number of notes, number of contents, number of classes. We have to prepare what short notes, detailed notes, right? So what about all these things? After that, if we are not getting
expected marks or expected ranks, then what about all these things? What about the notes? What about the short notes, detailed notes? What about our preparation? Is it useful? Yes or no? Is it useful? Yes or no? बिल्कुल ध्रुव, ये बिल्कुल सही बात है कि क्या 3 घंटे में आपकी दुनिया खत्म हो गई? अगर 3 घंटे में हम परफॉर्म नहीं कर पाए और हमने साल, 1.5 साल, 2 साल से जो गेट की प्रिपरेशन की, एवरीथिंग इज ओवर, राइट? According to me, no. According to me, no. Everyone, GATE exam is not the last option. We have number of options. Option 1, option 2, option 3 and option 4. So, after GATE exam, if suppose now we are getting the command over what? Number of technical subjects. For electronics branch, for electrical, mechanical, civil, computer science, IT and other technical branches. Now we are getting the command over what subjects. Through GATE preparation, definitely the concept will be clear, right? We are getting the command over the subject, we are getting the command over topic. With semester exam, it is not possible. With semester exam, yes, it is near to impossible. We will never get the command over subject, we will never get the command over what particular topic with semester exam. With preparation for GATE exam, definitely you are going to get what command over all these subjects. Then what is the need of this command? What is the use of all these commands? Right? So my dear friend, always remember, new goal will give you new motivation. Right? How's the juice? हमेशा लाइफ में एक टारगेट सेट कर लीजिए, एक टारगेट आपका अचीव हुआ, फिर अगले टारगेट की हम तैयारी करते हैं और अगले टारगेट में हम लग जाते हैं. तो क्या गेट एग्जाम हमारी प्रिपरेशन में हेल्प कर रहा है इन दिस वे? तो सिंपली if we are not able to get good marks in what GATE 2022, always remember we have number of opportunities like this. For example, you can go for what BARC exam, then this will conduct own exam. Then next option is what engineering services exam, that is conducted by what UPSC. What about the core subject? All the core subjects are similar to what GATE, similar to GATE exam. Then what state level AE exam. What's the profile of what AE? Assistant engineer. That is the state level exam. State engineering services exam. Right? State engineering services exam. Simply. Second thing, Airport Authority of India, YZ State, HAL, DFCCIL, NILET and many other technical exams. Already we have the notification about all these exams. So these are the opportunities if we are not able to get good marks in what GATE score. But first of all, we have to try for best. Simply try for single digit rank. Single digit rank means what? Under 10. Now the next 3 months, right? 3.5 months sufficient for GATE 2022. Now our target is to get what? First rank or single digit rank. Is it possible? According to me, yes, it is possible. Right? Why? Because we are providing you the good content, good quizzes. Definitely we will give you the direction. इतना भी काफी नहीं है, लेकिन lots of practice is required. You have to give the quizzes. You have to make what short notes, formula notes. You have to solve number of questions. Right? You have to attend regular session on this platform. Then it is possible to get single digit rank in what GATE 2022. फिर ऐसा क्यों है कि ऐसा हम फेल हो जाएंगे या ऐसे चांसेस क्यों हैं? देखिए, समटाइम्स क्या हो सकता है, अनफोर्सिन कंडीशंस आ गई. मान लीजिए आपकी उस दिन डे पर्टिकुलर डे पर तबीयत आपकी खराब हो गई, या आप कुछ क्वेश्चंस आपको क्लिक नहीं किए और आप क्वेश्चन ही नहीं बना पा रहे, तो क्या होगा? आपके गेट में स्कोर आएगा नहीं. हो सकता है, ये पॉसिबल है, कई बार होता है, अच्छे स्टूडेंट्स के साथ होता है, हमारे साथ भी हो चुका है कि उस एग्जाम में हम लोगों ने ढंग से परफॉर्म नहीं किया. तब क्या होगा? नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? तब आप याद रखिए, अगर एक विंडो क्लोज हो रहा है ना, तो नंबर ऑफ विंडोज आपके लिए ओपन हो जाएंगे. इसके साथ साथ आप तैयारी करते जाइए. सर, कैन वी एंटर द प्राइवेट इंडस्ट्री लाइक आईडी थ्रू द गेट स्कोर एज अ प्लान बी? राइट? इफ यू सिंपली Uttaya, that will be the way. With low GATE score we can enter into what? NIT, suppose, and then from we can get what? Entrance into what? Other private companies. Is it? It is possible. Yes.
right? And sometimes the other colleges will also conduct what exams. तो क्या minimum marks चाहिए? Already in one session already I have given you the idea about what BITS Pilani and the other colleges, IIIT Hyderabad and other colleges. Okay. Query पूछ सकते हैं after 10 minutes in chat box. Now you can ask me. You can ask me if you have any question. Then you can ask me. Yes, please tell me. Right, simply. Now, what about the pattern of what other exams? Is it similar to GATE exam? No. The pattern, for example, BARC exam pattern. What about the BARC exam? In BARC, normally up to this point, question, objective type, number of questions 100, exam duration 2 hours, marks per question 3, negative marking is what? 1 mark. Negative marking. In GATE exam, we have 3 types of questions. 3 types of question means what? MCQ. Second is what? Numerical answer type question. And third one is what? MSQ. Multiple select question. Multiple correct option. Now in this there is a 1/3 negative marking. For 1 mark question 1/3. For 2 marks question that is the 2/3, that is the negative marking. That is the pattern of what? GATE exam. What about the pattern of the BARC exam? Total objective, total MCQs. Total MCQs. Okay. And then what? Exam duration, GATE exam duration is 3 hours. What about the duration of the exam? 2 hours. 100 questions. What about the number of questions here? 65 questions. So my dear friends, what about the level of the questions? Please tell me. In 3 hours, we have to solve 65 questions in GATE exam. And in 2 hours, we have to solve 100 questions in BARC exam. Definitely, the level of questions will be easier as compared to what the level of questions in a GATE exam. Suppose we are preparing for our GATE exam, then we will be able to solve question in BARC. Yes or no? This will become very easy for you. So that is good opportunity for you. Second thing, second exam. That for example, engineering services exam pattern. Engineering services exam pattern. Is it possible to crack this exam? Yes. Right. First of all, focus on what? Just prelims. Right. Then what? Second option mains. Second stage. Then third one is what? Interview. Right. Give extra effort to prepare general studies. Around 100 hours to 150 hours is required to prepare all these topics. Right? General studies. Paper 1, objective paper. Okay. Then what about the engineering discipline? So, around 80% syllabus. 80% syllabus similar to what? GATE exam. In objective, I am talking about the objective. 80% syllabus is similar to what? GATE exam. Then we have to prepare extra 20 to 25% extra subject in engineering discipline. Right? Yes, it is possible to cover that remaining 20 to 25% if you are giving extra 100 hours. Then if you want to crack GATE and engineering services exam, then minimum you have to give 150 plus 100, that is what? 250 hours extra. If you have time, then you can give 250 hours extra for what? Preliminary. Then what? For mains exam, first of all, go for what? Prelims. Clear this exam, then we will give you the content for what? Mains, and then what? For interview. So what about the mains exam? It is just like what? Semester exam. Don't worry about the mains exam. First of all, try to focus on pre. So after GATE, yes, it is possible to crack what? Engineering services exam. Or this time, what about the schedule? What about the schedule of engineering services exam? It is in January or it is in February? Engineering services exam 2022. Remember my friend, it is in what? Feb. After GATE exam. After GATE 2022. Then engineering services pre 2022. We have around 10 days, more than 10 days for what? Extra 10 days for engineering services exam. So second opportunity. Then what about the third? SSC JEE exam pattern. What about the level of all these exams? If suppose, try to understand this theory. If I am preparing for SSC JEE,
For example, directly I am preparing for what SSC JEE exam. Is it possible to crack? If I am preparing for what SSC JEE, now I want to crack what GATE exam. Is it possible? I am preparing for this exam and now I want to crack what GATE exam. Is it possible? Yes or no? Tell me, is it possible? According to me, it is not possible. If suppose we are preparing for what SSC JEE and we want to crack what GATE exam or engineering services exam, it is never possible. Okay, but now opposite direction. Suppose I am preparing for what GATE exam, then what about the SSC JEE exam? It will become very easy for you, right? Definitely. तो आपको सीधा सीधा गेट एग्जाम की तैयारी कीजिए. साइड इफेक्ट में जो सब एग्जाम है ना, वो साइड इफेक्ट में आप क्रैक कर लेंगे. किसी भी छोटे से एग्जाम की तैयारी करेंगे ना, तो ये पॉसिबल नहीं है कि आप कभी बड़े एग्जाम्स निकाल पाए. ओके, कहीं भी आप याद रखिए, हमेशा एक चीज अपने दिमाग में बैठा लीजिए, जो भी आप प्रिपेयर कर रहे हैं वो कभी भी वेस्ट नहीं होने वाला है. ओके, और इतना टेक्निकल नॉलेज होगा, इतनी सारी चीजें होंगी अगले 4 महीनों के अंदर अंदर, इतनी ज्यादा आपके सब्जेक्ट्स में कमांड होने वाली है कि जिंदगी में आप दोबारा कभी इतनी पढ़ाई नहीं करोगे. हाँ, रिवाइज करोगे, सिस्टमैटिक ढंग से बार बार क्वेश्चंस बनाओगे, लेकिन एक बार आप सिस्टमैटिक ढंग से प्रिपरेशन कर लीजिए, देन दिस विल बिकम वेरी इजी फॉर यू. अगर यहाँ पे आप 100% एफर्ट दे रहे हैं, 100% एफर्ट, तो ये तो 20% एफर्ट में ये एग्जाम आप क्लियर कर सकते हैं. Very simple exam, and that is about the pattern. Online objective type, then what written type, and that is what simple reasoning, intelligence questions. Go for what aptitude and math. You will be able to solve these questions. Okay. Then some questions from what general engineering, that is the civil or electrical or what mechanical. So that is the pattern of SSCG. Okay. I'm talking about what, yes, in some cases, yes, we can say, but normally it is for what civil branch, mechanical and what electrical branch. That is what civil, electrical and what mechanical branch normally. In some cases you will be eligible for what this post. Okay, that is the civil, electrical and what mechanical, and that is about the pattern. Now, scientific and technical assistant exam pattern, offline and what objective. So questions from respective stream, that is what 60. Then analytical reasoning capability, quantitative, then qualitative abilities, general awareness and what aptitude, 60. Total 60 plus 60, how much? How many questions? 120 questions. 60 marks, 60 marks. Again, what about the level of this exam as compared to what GATE exam? Definitely very easy as compared to what GATE. Simply, you can compare this, right? And what negative marking? That is what 0.25 marks. Negative marking is 1/4 in this exam. Another opportunity for you. Next one, right? Airport Authority of India Junior Executive Post Airport Operation Exam Pattern. That is the part A, and that is what part B. Right? General English, general reasoning, general aptitude, general knowledge and general awareness. Question related to what? Education qualification. So, देखिए how many questions? This is the 60 total questions from this portion. 60 questions, right? And that is what duration 120 minutes. In 120 minutes you have to solve what 60 questions. ये है pattern. As compared to what GATE exam, what about the level of questions? Very easy. तो आप अगर GATE के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो डेफिनेटली सेकंड जो आपके रिमेनिंग एग्जाम्स हैं उन एग्जाम्स को आप बहुत ही इजीली क्लियर कर सकते हैं. तो दिस इज अबाउट फ्रॉम माय साइड, राइट? सिंपली गो फॉर what GATE 2022. Sincerely prepare for what GATE 2022. Get the command over subject. Don't try to mug up the subject, right? Try to understand the concept, try to understand the basics, and try to solve number of questions from previous year paper. Okay, previous year question paper, and try to solve number of questions on math, from aptitude, and get the command over technical subject, right? And try to solve minimum 15 to 20 years previous year question paper. And for electronics and electrical branch, you have number of common subject. Then you can follow the GATE electronics,
gate electrical, and what gate instrumentation. Try to solve the questions from electronics, electrical, and what instrumentation for common subject like what network, control system, okay, digital, analog. You can solve. ठीक है, ये आशुतोष मैंने जो आपको बताया है वो जो पहले पैटर्न था कोविड सिचुएशन से पहले है, ये सब अपॉर्चुनिटी आएगी। और एक मैं बात बता दूं आपको, जब अपॉर्चुनिटी आएगी ना तो आपको फिर टाइम नहीं मिलेगा एक्स्ट्रा, वी आर नॉट गोइंग टू गेट द एक्स्ट्रा टाइम। बाकी देखो गेट एग्जाम आपको हर साल फिक्स होता है, फैब में होगा, इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम आपको पहले से पता होता है, राइट। लेकिन आपको जो बाकी एग्जाम्स के जो नोटिफिकेशन आते हैं, जैसे ही नोटिफिकेशन आए विद इन 1 मंथ 2 मंथ और मैक्सिमम 3 मंथ्स, यस और नो, वो अलग बात है। बिकॉज ऑफ कोविड कभी पोस्टपोन हो रहा है बार का एग्जाम एंड सो ऑन, दैट इज अ सेकेंडरी मैटर। लेकिन जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा एग्जाम होंगे, वी आर नॉट गोइंग टू गेट द सफिशिएंट टाइम टू प्रिपेयर फॉर दोज एग्जाम्स। इसीलिए आप पहले से स्टार्टिंग से ही आप प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दीजिए, और जब आएगा नोटिफिकेशन तो तैयार हो जाइए। अभी कोई भी डिटेल नहीं है सयान, जैसी डिटेल आएगी आई विल गिव यू द इंफॉर्मेशन अबाउट दैट इसरो एग्जाम, राइट। सर आई एम फाइनल ईयर सिविल, मे आई बी एबल टू क्रैक द एग्जाम सर, वेरी ओके। डर का माहौल है दिव्यम, डरना तो है ही, इसलिए तो डर हटाने के लिए आपको बोल रहे हैं। एक चीज मैं आपको बता दूं, जो आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है कि सर मतलब एंजाइटी हो रही है, डर लग रहा है, ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि आपने एग्जाम ही को एकदम लास्ट रिसोर्स मान लिया। यस और नो, it is not last resource, we have number of options, number of options। आप तो कहीं भी जा सकते हो, कोई इंजीनियर कुछ भी कर सकता है, एमबीए कर सकते हो, कॉन्ट्रैक्टशिप पर जा सकते हो, और भी अदर एग्जाम से उसको भी निकाल सकते हो। आप तो वैसे भी सिविल ब्रांच से, कुछ नहीं होगा तो आप अपना पर्सनल काम स्टार्ट कर सकते हो, डोंट वरी अबाउट दैट। इसको आप जितना सोचते हैं ना उतना बड़ा है डर, एग्जाम बड़ा नहीं है, एग्जाम का डर ज्यादा बड़ा हो जाता है। दैट्स व्हाई आई एम गिविंग यू द नंबर ऑफ ऑप्शंस। अब अगर आप इतने ऑप्शंस को लेकर नहीं चलते ना तो ऑटोमेटिकली एग्जाम प्रेशर आएगा और आप नेचुरल तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, आपके एक्सपेक्टेड मार्क्स नहीं आएंगे, राइट। दैट इज द रीजन। BSc Physics, what is my scope in PSUs? Abhijit, I have to collect the data and then I can give you the answer for this question. Okay, I am from electronics branch, no doubt I have idea about what electronics and electrical, but in your case I have to collect what authentic data. Okay. आशुतोष, गेट ईसी टफ है, हु टोल्ड यू दैट गेट ईसी टफ है? वैसे तो सभी एग्जाम ही टफ है, विदाउट प्रिपरेशन एवरी एग्जाम इज टफ। अब आप सोचेंगे कि अगर मैं इसी से हूं तो इसी वाले को इसी टफ लग रहा है, इलेक्ट्रिकल टफ है, इंस्ट्रूमेंटेशन टफ है। अगर आप सिंपल डायरेक्शन पर प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप स्मार्ट वर्क कर रहे हैं, आप डेडिकेटेड पूरा है इस एग्जाम को निकालने के लिए, रोज 8 से 10 घंटे देने को तैयार है, यस और नो? आर यू रेडी to give the what minimum 8 to 10 hours for next 3 months? Are you ready? Minimum 8 to 10 hours for next 3 months. October, November, December, January, right? So that is the 3.5 month. तो definitely अगर आप प्रॉपर डायरेक्शन पर जा रहे हैं, सिस्टमैटिक ढंग से प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप देखेंगे थोड़े समय बाद ही आपको एग्जाम इजी लगने लग जाएगा। 6 CGPA in my BTech will good get score will help. Oh, definitely. उसको भूल जाओ। संजय, what was your result previously? क्या रिजल्ट है, क्या नहीं है, simply leave it. Okay? अभी आपको इंटरेस्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है सब्जेक्ट में, ये बताइए। अभी आपको इंटरेस्ट आ रहा है सब्जेक्ट में कि आप जब पढ़ रहे हैं आपको जब सब्जेक्ट समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, यस और नो? अगर आपको सब्जेक्ट समझ में आ रहा है और आपकी कमांड हो रही है तो आप पहले फर्स्ट ऑफ ऑल सिंगल डिजिट रैंक लाने की कोशिश कीजिए, सिंपली। सुरजीत, एप्टीट्यूड का सिलेबस सेम है क्या सर ईएससी एंड गेट पर? देखो एक सुरजीत, मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आप गेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उस पर अगर आप एफटी की रेगुलर क्लासेस कर रहे हैं, तो आपको इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम को जो एफटी है ना वो बहुत ही आपको इजी लगेगा, क्योंकि ये जो इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम का एप्टीट्यूड है वो ऑब्जेक्टिव के लिए है। सेकंड थिंग, वी हैव टू सॉल्व 100 क्वेश्चंस, वी हैव टू सॉल्व व्हाट 100 क्वेश्चंस फ्रॉम 10 टॉपिक्स। इज इट क्लियर? 200 मार्क्स, 100 क्वेश्चन इन इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम, 100 क्वेश्चन, 2 मार्क्स, 200 मार्क्स टोटल इन 2 hours। 2 hours means what? 120 minutes, 120 minutes।
Then, my dear friends, the level of questions is just similar to what level of what GATE paper. Don't worry about that. It is sufficient. Okay. क्या है, गेट प्रिपरेशन कर रहा हूँ सर, क्या इजी लगता है, अभी टफ का भी कुछ चलने दो, टेस्ट सीरीज दीजिए। टेस्ट सीरीज एक चीज है एवरीवन, विदाउट प्रिपरेशन कभी भी टेस्ट सीरीज मत दीजिए। विदाउट प्रिपरेशन अगर आप टेस्ट सीरीज देंगे तो वहां पर आप प्रॉब्लम में जाएंगे, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा, आपके नंबर आएंगे नहीं और आपको चीजें टफ लगने लगेगी और आप उतने सिंसियर तरीके से प्रिपरेशन नहीं कर पाएंगे। राइट, तो पूरा तैयार करने के बाद टेस्ट सीरीज दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल बात सही है, आप लगे रहिए, बस लगे रहो और आपको देखिएगा थोड़े समय बाद आपके ऑटोमेटिकली कमांड होने वाली है। राइट, ओके। इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट, आई एम कंप्लीटेड सिग्नल एंड सिस्टम, कंट्रोल सिस्टम, नेटवर्क थ्योरी, मैथ्स एप्टीट्यूड। हाउ मेनी गेट स्कोर आफ्टर दिस? यू वांट टू आस्क आदित्य, राइट? You want to give the gate with what? Signal and system, control system, network, maths and apti only. So what about the core subject? If you have sufficient time, then go for what core subject? If you are going to get the 50 out of 100, right? 50. Is it possible to solve each and every question? You can maintain what 100% accuracy? Aditya, is it possible? Okay, Kunal, Rohit. We will arrange extra session for this. I am not from the civil branch. I can give you the general idea. I am not from the civil branch, right? Ankit sir or what Abhinav sir will give you the idea about that. Okay. Surjit, मैथमेटिक्स कैसे करूं सर, गेट एंड ईएससी साथ में? अरे देखो सुरजीत, आपका जो गेट का मैथमेटिक्स है और इंजीनियरिंग सर्विसेज, दोनों के मैथमेटिक्स को आप सिंपली क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिए, सिलेबस कवर कीजिए। गेट का इंजीनियरिंग सर्विसेज का मैथमेटिक्स ऑलरेडी कवर हो जाएगा, डोंट वरी अबाउट दैट। ओके, तो आपका देखो, मैं आपकी जो मेन सेशन की थीम है, जस्ट सिंपली आई वांट टू से विद ए प्लान, please simply prepare what B plan. It will release the pressure, right? So that you will perform according to your expectation. अब आप देखो अनड्यू प्रेशर लोगे, आपको लगेगा कि गेट ही सब कुछ है, उसके बिना कुछ नहीं हो पाएगा, तो डेफिनेटली आप पेपर में बहुत अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। आप गेट एग्जाम की सिंसियरली प्रिपरेशन कीजिए, लेकिन उसको एक एज अ सेमेस्टर एग्जाम लीजिए। जस्ट आप मानिए कि यार एक कुछ भी नहीं है, एक एक्स्ट्रा एग्जाम बस तो है, और देखिए फिर आपके कैसे मार्क्स आते हैं। आप जितने ज्यादा बिंदास होकर जाएंगे, जितना आप फ्री माइंड से गेट एग्जाम देने जाओगे, उतने अच्छे नंबर आएंगे। ये ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग है, ये हमारा एक्सपीरियंस है, इतने सारे बच्चों को पढ़ा चुके हैं। बहुत ज्यादा आप प्रेशर लेकर जाएंगे तो आप नेचुरल तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाओगे। राइट सर, अगर 100 का एम करेंगे तभी तो 85 तक। हाँ बिल्कुल, देखिए सिंपल सी बात है, आपको क्या करना है, पूरा सब्जेक्ट प्रिपेयर करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल सिंपली फॉलो द स्ट्रेटजी, go for what 60 to 70% easy and moderate portion. Always remember that should be the strategy. First of all, prepare what 60 to 70% portion, that is what easy or moderate from all the subjects. If suppose we are having the 12 subjects, then first of all prepare 60 to 70% from each subject, that is easy and moderate portion, and then go for what tough portion. Then go for simply tough portion. For example, 60 to 70% easy and moderate from each subject. Then prepare 10% extra from each subject. For example, I am having the 12th subject, that will be the strategy. 10% extra, 10% extra. Then after this we will cover what 80% from each portion, and then go for what next 5% from each subject. That should be the strategy. It is never ever possible to what 100% syllabus of particular subject. सर मेरा टेक्निकल सब खत्म हो गया, अभी कैसे एप्टी मैथ्स प्रिपेयर करूं समझ नहीं आ रहा है। तो अच्छा, टेक्निकल ओवर कर लिया है आपने, और सिंपली यू हैव टू प्रिपेयर व्हाट एप्टी एंड मैथ्स। अरे बहुत बढ़िया बढ़िया क्लासेस आ रही, राकेश सर यहाँ पर क्लास ले रहे हैं, आप क्लासेस अटेंड करना तो स्टार्ट कीजिए। नाउ वी आर गोइंग टू प्रोवाइड यू व्हाट क्रैश कोर्स फॉर व्हाट गेट 2022, तो वो रेगुलर क्लासेस कीजिए। राइट, और साथ में मैथ एप्टी की रेगुलर क्लासेस चल रही है, मिडनाइट पर क्लासेस चल रही है सुरजीत।
और सिंपली जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है, आप अगर आप किसी भी ब्रांच से हैं, फॉर एग्जांपल आप मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स, आपको सभी ब्रांच के मैथमेटिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करने, एंड आफ्टर सम टाइम यू विल गेट द कमांड ओवर दैट। अब टेक्निकल खत्म हो गया तो बहुत ही शानदार है, लेकिन क्या आप वो स्पीड और वो नंबर मेंटेन कर पा रहे हैं? जितने भी टेक्निकल क्वेश्चंस आते हैं आप उसको बना पा रहे हैं, वो भी आप जरूर चेक कर लीजिएगा। तो भाई आप अपनी अटेंडेंस जरूर दीजिए, एक बार लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर लीजिएगा, सेशन को अपने ग्रुप में जरूर शेयर कर दीजिएगा। ओके, देन एनी अदर डाउट्स, राइट? So this is about the other competitive exams. Those are related with what? GATE 1. So simply go for what? GATE 2022 with positive mindset. Don't worry about the result. Don't worry about this result. Okay. Simply focus on preparation without any negative thought. But my dear friend, always remember, right? This one, that is like this is the syllabus. Always remember, in syllabus 60% are what? Relevant things, and what about the remaining 40%? These all are what? Redundant things. Redundant, right? Then simply focus on what? 60% relevant things, and simply leave what? Redundant things. You have to decide. We have to decide because we have limited time. And that is okay. Now, so PIP repeat करते हैं for electrical engineering. Aditya, why you want to solve again and again previous year questions? Simply, if you want to solve the previous year questions, right? For example, there may be 100 questions, previous year questions. Out of 100, what about the level of the 50 questions? Simply formula based. Then remaining 50. Out of remaining 50, like the 10 questions is what? Some conceptual questions. Remaining what? 10 questions. Moderate level. 10 questions. High level. 10 questions. Very high level. And 10 questions very, very high. Very, very high level. Very conceptual questions and so on. So no need to solve this question again and again and again. Simply focus on all these questions. Simply focus on all remaining questions. Okay. हाँ, अभी आपके और भी सीरीज आ रही है रेगुलर. We will provide you the question series. We will provide you a crash course, but theory plus numerical. So electrical, electronics, mechanical, and civil branch. Okay. Any other doubt? Any other doubts? Everything is clear? Yes. So go through the pattern of other competitive exams. Right, we have the idea about all this. We are providing you the data. If you want the PDF of this, then simply join my Telegram channel. That is what? Electronics by Sanjay Rathi. You will get the PDF of all this session. So go through the pattern of other exams like engineering services exam, BARC exam, SAIL exam, ISRO exam. Okay, and do your preparation accordingly. Okay, everything. Okay, then thank you very much. Please like the session, subscribe our channel. You are on BYJU'S Exam Prep, India's #1 trusted brand for ESE, GATE and PSU. Thank you and good night.